Sorry. Good afternoon, everyone. So today we have to start. I'm sorry. So today we have to start the parental care and amphibians, right? Good afternoon, guys. प्लीज आप कर दीजिए क्या मैं आप मेल करो क्योंकि ना वो फिर क्लास की वरना बस क्लास में आप मेल कर दीजिए प्लीज मुझे टैग कर देना ठीक है वो क्लास की डेट हो जाएगी 3 बजे क्लास नहीं नहीं ऐसा कुछ नो इश्यूज देखती हूँ फिर मैं करती हूँ मैनेज मैम एक्चुअली पता है कंटिन्यूस क्लास में ऐसा sneezing and all so I thought कि maybe I'm not able to do thank you. Sorry. Yes. देखो, so the next topic in your is there any doubt in the origin of tetrapoda or the evolution of the tetrapoda? नहीं ना मतलब of course I have not provided the PDF but whatever we have discussed in the last class is there any doubt about it मतलब when we are talking about that evolution of the tetrapoda we do not need to connect the whole invertebrate and vertebrate we do not need to, okay we simply need to connect either the agnatha or gnathostomata or even if you want you can simply directly connect with the pisces ठीक है pisces में we know that different type की classification है so according to contract thief ostrich thief और फिर आपका polyphyletic that's only 3 type of linkage you require ठीक है so in that today's lecture we are going to talk about the parental care suppose that even if you do not know about the parental care still we basic thing okay what is the significance of the parental care and this is something important the question comes not only from the parental care and amphibians but also their significances okay so parental care is not only shows that this is one of the characteristics of the amphibian it actually shows that how animals are evolving and how one of these characteristics like it is one of that useful method or the beneficial method for the better or the more survival of the organism okay suppose that if we talk about the insect or if we talk about any small insect or mosquito or everything like that insects ants mein to fir bhi they have the social because they are the social insects they do a certain kind of liver division right but if you think of the mosquito can they do the parental care no है ना so parental care का आपको मतलब whenever you are writing the answer you do not need to simple okay so this is something I'm trying to tell you so whenever suppose that you are writing the parental care of answer do not simple write the okay these are the methods of the parental care and something like that of course examiner knows that these are the points if you are writing the means you know है ना so when you are writing the significance or the conclusion इसको कनेक्ट ऐसे करना है so that the examiner get to know कि आप इसका क्रक्स पकड़ रहे हो ठीक है ऑल्दो द आपके कोटपाल में दिस इज स्पेसिफिक बहुत शॉर्ट में बट मेंशन है द पेरेंटल केयर इन द फिशेस आल्सो बट इवन फिशेस आर नॉट परफॉर्मिंग द पेरेंटल केयर दैट मच and it started from that amphibian even in the reptiles do not show that much evolved characteristics of the parental care why the need if we compare to the amphibian and the reptiles why the amphibians need to do the more parental care compared to the reptiles tell me amphibians are generally less developed than the reptiles. Yes, that's true. Absolutely correct. Online, why the need of the more parental care in amphibians compared to the reptilians? While the complete statement is while the parental care is one of the characteristic feature of that higher chordates. Still, so compared to the amphibians, reptilians are the higher chordates. But फिर भी हम parental care इसमें ज़्यादा क्यों देख रहे हैं? Why? Yes, two modes of life in amphibians. So
It's a very good. Correct it more. Yes. ठीक है, देखो your point is absolutely correct, but you need to just frame it accordingly, because transition from the Pisces to the amphibian is one of that drastic or that greatest evolution, right? तो उसका सर्वाइवल पॉइंट वहां पे बहुत क्या हो जाता है, इट इज अ वेरी रिस्की, है ना, इफ यू आर नॉट केयरिंग, बिकॉज अडल्ट्स आर लिविंग इन योर टेरेस्ट्रियल लैंड फॉर्म while they are young ones or the larval forms living in your water. So how do they can survive? Suppose that if my parents are living, suppose that any newborn baby which is born in India, and and his or her parents living in some USA or Canada, can they survive? Can the child can survive? No. So parents need to do certain kind of parental care, right, to survival of that particular child. Maybe after that generation, after that particular child, the complete generation will going to live in some foreign countries or the Europe countries, right? So because of that, the foreign shifting, that means a shifting of that amphibians to the land, it is very crucial step in the evolution. So because of that, nature has given this concept, no, you need to serve, you need to do the parental care, ठीक है? So basic thing, जब भी आप parental care का significance लिख रहे हो, so एक तो basic we know what are the significance of the parental care. Tell me one. Vishnu, tell me the first Vishnu, not Vishnu, तो अभी उसने Rajkumar, Rohit, Manish, and everyone. Tell me the why the parental care is required or what are the significances. Yes, very good, to increase the chances of survival. Shivam, yes, in a very better form of the energy conservation. Otherwise, if that particular larva will try to survive by itself, है ना, so maybe उसकी growth पे impact पड़ेगा. Suppose that we must have, we can correct like that suppose that there's a kid, है ना, it is that kid is particular like in the 4 to 5 years of age. In that age group, if he is trying to earn the money, simultaneously the basic requirement in that 4 to 5 years of age is the education, right, and the nutrition. But at the same moment of time, he's trying to earn the money to take care of his family and everything. So उसकी growth पे impact पड़ेगा, है ना? यहाँ से आप you can, मतलब this is a direct sources. Second क्या है? Conservation of energy या best use of energy. Conservation of or best use of energy. More number of young ones survive. Yes, when we are writing that increase the chances of survival, यहाँ पे हम लोग both लिख सकते हैं, quality and quantity. But that's a good point, Manisha. Quality and quantity. More number of people will going to be survive. Separately भी लिख सकते हो. It's absolutely correct, but ultimately the survival thing. Other than that, हाँ ठीक है. Increase developmental rate. थोड़ा डाइवर्ट सोचो और increase developmental rate. Rohit, Astha is not there. Okay, Rajkumar, more. Yes, predatory से आपको बचा रहा है. Obviously, the parents when बहुत सारे जो आपके Rhacophilus की one of the species, what they do, they just coil around like after the laying egg of the female, they just carry कि उसको protect करके रखते हैं. Male का कोई काम नहीं होता है. But of course उनके जो female के जो eggs हैं या उनके जो eggs हैं, this is one of the best food for the predators, है ना? क्यों है best food? Because they are the they are not moving animals, है ना? तो वो कहीं भी यहाँ पे static है, so animals will feed her. So protection from that predators. So protection from the, yes Manisha, exactly, protection from predators. Anything else? Almost all उतना ही है, ठीक है? चलो, now we are talking about that parental care. अच्छा, one more thing, कैसे कर सकते हैं parental care? Everyone know about the amphibians, है ना? हमें पता है what are the amphibians. What can be the method? Suppose that you do not know anything, still tell me what can be the method to protect the larvae or to protect the eggs. What can be the methods? एक तो simple है, like suppose that how the parents care their child. ऋतिक, पानी please, ठीक है? Okay. So suppose that your parents, how do they care? कैसे करते हैं? The best home, है ना? They find the most protection area. Best way में कैसे है कि आपका protected area रहना चाहिए, ठीक है? तो इसमें भी यही है. So actually whatever the points we are going to talk about in that parental care, we can differentiate majorly into 2 points: the selection of site, the
selection of site for laying the eggs, of course. And उसके बाद क्या, सपोज दैट पेरेंट्स सपोज दैट वर्क पे जाते हैं तो बच्चों को अपने अच्छे से घर में रख के जाते हैं, अदरवाइज मदर विल ऑलवेज बी विद दैट, है ना. सो डायरेक्ट कैरिंग द एग, डायरेक्ट कैरिंग द एग. These are the basic two methods for the parental care. Of course, मैं dictate कर सकती हूँ और आप लोग लिख सकते हो. I'll provide the PDF. You guys will remember. But better है इसको ratification. If you will not do the ratification, better to understand. There's only two methods. Either the parents are choosing the best home in their absence, or if they are present, they will carry you with yourself. है ना. पेरेंट्स या तो घर में आपको छोड़ के जाएंगे, या तो अगर वो कहीं फेयर में लेके जा रहे हैं, मेले में लेके जा रहे हैं, तो आपका एक हाथ पकड़ के रखे रहेंगे. ठीक है. So these are the mainly two methods. ठीक है. So यहाँ पे when we talk about the selection of sites, one species of male frog keeps egg on their back. Yes, Manisha, absolutely correct. We have mentioned that examples also. So whatever the selection of site, तो उनका सबसे पहले nest बनाने का तरीका होगा. ठीक है. They will choose the location even if they are not making nest. में we'll talk about that further. How many types of mud nest, foam nest, leaf nest and so on. ठीक है. चलो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है. This is your PDF of. इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, जितना एक्सप्लेन करना था it was enough. अनुष्का, रिक्वायर्ड कुछ है, कुछ डिक्टेट करने की जरूरत है. दिस इज अ फुल एक्सप्लेन्ड पीडीएफ. ठीक है. शो ऑनलाइन. आई डोंट थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द टॉपिक वेयर वी नीड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. दिस इज मोर देन एनफ व्हाट वी हैव एक्सप्लेन्ड. ठीक है. तो ऑफ कोर्स सपोज दैट पेरेंटल केयर इन फीमेल्स आएगा, सो हाउ डू वी इंट्रोड्यूस, कैसे करेंगे इंट्रोड्यूस, हाउ डू वी इंट्रोड्यूस इफ द पेरेंटल केयर इन फीमेल्स विल आस्क. Exactly. First we'll define that what is the meaning of or the definition of that parental care. Okay. Then yes, that amphibians are one of that organism. Here you are telling the examiner that you know that amphibians are in that land में या फिर overall organism में. The actually parental care start from here because of that transition. इतना लिखना है. I have seen some of the answer. They will start writing the purpose also for the protection, for the feeding, for this, for that. No, you do not need to do that. Okay. So when you are writing the introduction, please do not write the purpose because the purpose we are going to talk about in the significance. ठीक है. हम लोग ये चीज ध्यान रखेंगे. तो इसमें आपकी पेरेंटल केयर की जो डेफिनेशन है, आई हैव गिवन विद सम स्पेसिफिक साइंटिस्ट थ्योरीज आल्सो. ठीक है. जैसे कि आप सिंपल लिख सकते हो दैट व्हाट इज पेरेंटल केयर टू प्रोटेक्ट द यंग वंस और द एग्स इन दैट थ्रू द पेरेंट्स. ये सिंपल सी डेफिनेशन है. ठीक है. बट एक आपके स्टैल स्मिथ और डिनार्डो ने बोला था पेरेंटल केयर कैन बी डिफाइंड एज नॉन जेनेटिक कंट्रीब्यूशन. ऑफ कोर्स दिस इज after the laying of the eggs, okay, by a parent that increases the fitness of the offspring and can occur before or after laying or. Okay. Why we are mentioning the before? It's a complete definition. Whenever you're mentioning the definition, please mention that kind of definition because various आपके जो amphibians होते हैं, some of the amphibians actually lay their eggs in their buccal cavity or the stomach in itself, and वहां से वो egg बाहर नहीं आता, वहां से लार्वास बाहर आते हैं. I have mentioned the diagram also. ठीक है. So that means they actually before the laying of the egg because they carry that particular egg second point में inside of the body. ठीक है. ये आपकी दो एक आपकी ये डेफिनेशन है और एक आपकी और करके ये डेफिनेशन है. ठीक है. अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं याद होती है तो आप इसमें से कोई भी इंट्रोडक्शन के थ्रू चूज. पेरेंटल केयर की इट्स अ सिंपल डेफिनेशन. From this, if you are remembering any 4 points, any 4 lines, you will good to go for that introduction. ठीक है. Then we'll talk about method of the parental care in amphibians. Majorly इसमें आपका parental care in amphibians में क्या दिखाएगा? Either they are behavioral care or the physiological care. But आप अगर methods की बात कर रहे हो, this is the way. ठीक है. Protection by nest or the selection of site or the direct caring by the parents. ठीक है. उसमें फिर हम लोगों ने you can want if you want you can divide under that or you can divide differentiate like deposition of eggs. This is one of the basic pattern. इसमें क्या करते हैं? रीच ऑफ द एक्वेटिक प्रेडेटर से दूर रखते हैं. इसके भी एग्जांपल हमने मेंशन किए राना टिग्रीना. फिर देखो नेस्ट बिल्डिंग में वी हैव मेंशन द मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेस्ट बिल्डिंग. जैसे कि यहाँ पे व्हाट वी हैव मेंशनड मड नेस्ट, फोम नेस्ट, टनल नेस्ट एंड आई थिंक इन दैट ईच पॉइंट वी हैव मेंशनड द एग्जांपल. हाइलाफेबर फोम नेस्ट में आपका रैकोफोरस. ठीक है. अमेरिकन ट्री फ्रॉग भी यही होता है रैकोफेरस. टनल नेस्ट में भी आपका रैकोफेरस. रैकोफेरस इज वन ऑफ दैट स्पीसीज
which actually shows a very good or evolved form of the parental care. ठीक है. Then after some of the क्या कहते हैं amphibians show that gelatinous bags, वो egg कुछ egg lay करते हैं, उसके ऊपर gelatinous की cover करते हैं. What is the significance of the gelatinous bag? Why the need of the gelatinous bag? Protection from, yes, protection, but protection from what is the significance of the gelatin like substances? Thank you. Outer surroundings, okay. Protection from water currents, moisture, yes, of course. अगर suppose that any egg is like gelatin, हम लोग क्या, इससे gelatin is a kind of slimy substance. So egg को hatch करने के लिए either they want warmth, moisture, है ना. तो वो moisture या फिर every time of nutrition, gelatin is as a kind of either the foam or the gelatin, it is a kind of nutrition or providing that moisture to prevent the desiccation of egg. Drying से वो सूखता है, क्योंकि if the egg will be dry, it will be crack, है ना. होती तो कैल्शियम की है, so it will be crack. So gelatinous bag का जो है वो ये है. उसके बाद लीफ नेस्ट, साउथ अमेरिकन फाइलोमेड्यूसा. उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है. देन आफ्टर एग गार्डिंग, एग गार्डिंग में आप बहुत सारे लिख सकते हो कि कैसे कैसे गार्ड करते हैं. उसके बाद कैरिंग एग्स लार्वा ऑन द बॉडी. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें एक्सटर्नल केयरिंग भी है, कैरिंग ऑन लेग्स ओवर द बॉडी भी है, फिर अराउंड द हेड और नेक है, फिर कॉलिंग अराउंड द एग है, कॉलिंग. अच्छा, व्हेनेवर वी आर राइटिंग दिस पॉइंट ना, whatever we are writing for, suppose that someone has said ki food providing to embryo and temperature maintaining. Rajkumar, temperature maintaining will be enough. Food gelatin is not actually providing the food, it is keeping the moisture, है ना. तो food I would not say. So whenever you are writing the point, ठीक है, just represented to form में you have to make the diagram also. यहाँ पे क्या कर रहा है, we know that some of that, इसने क्या किया, आपको बहुत सुंदर फ्रॉग नहीं बना, इट्स नॉट दैट मच बैड, ठीक है. सो यू डू नॉट नीड टू मेक द वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम. जैसे कि एक हमें पता है दैट कॉइलिंग अराउंड द एग, ठीक है. तो ये आपका क्या हो गया, एक थियोफिस हो गया, है ना. इसने क्या की, कॉइलिंग अराउंड दैट एग. You have to just show that in that minimum period of time you can represent also. That's why you have chosen the zoology. It will take minimum to minimum 5 seconds. If you are in the fluent, no, it will not take the more than this minute. ठीक है. पॉइंट के साथ में आपको दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू ड्रॉ, ठीक है. कॉलिंग अराउंड द एक्स के सपोज दैट ये पॉइंट फिनिश किया, यहाँ पे आपने डायग्राम बना दिया. डॉर्सल पाउचेस एक्स ऑन द बैक्स ऑफ द फीमेल, यहाँ पे आपने वाला डायग्राम बना दिया. फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस, ठीक है. देन आफ्टर ये देखो, है ना, इजी है डायग्राम. एक एक्चुअली आपका ये होता है, एक आपका बायोस्टोमा का होता है, दिस इज कैरिंग द एग नेक के पास में लेके चलता है. इट लुक्स वेरी वियर्ड, वेरी वेरी वियर्ड. इसका एक रियल डायग्राम आई हैव सीन दैट, बट इट लुक्स वेरी वियर्ड, ठीक है. इंटरनल ब्रूडिंग में गैस्ट्रिक में भी रखते हैं, वोकल सैक यहाँ पे भी, बिकॉज वोकल सैक होता है ना, उसमें स्पेस होती है. तो सम ऑफ द मेल वोकल सैक का यूज क्या होता है, एक तो फर्स्ट इज प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड, है ना, टर टर की जो आप देखो अब उसमें. अदर देन दैट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वोकल सैक? तो वोकल सैक इज वन ऑफ द मेथड. वोकल सैक इज mainly using for that producing the sound, but this is one of the method to attract the male or the female to opposite partner. And this process which is laying the egg, this is after that attraction, right? So यहाँ पे उसका यूज नहीं रह जाता, that है, ठीक है. So that in that spacious cavity they just keep the egg, ठीक है. Next, even the size of the vocal cap, मतलब it is also when we cover the ethology or the animal behavior, ठीक है, इसमें हम लोग pheromones पढ़ते हैं या sex hormones पढ़ते हैं. तो उसमें this is one of the method so that male or female attracts toward each other. जैसे कि we know that elephants में one of that female or the male attraction, और the peacocks में the beautiful colors, है ना, feathers की beautiful colors, या जितनी long उसकी वो होती है, क्या कहते हैं, teeth होता है ना. This is one of the kind of, या फिर रेंडियर्स में as soon as much जो भी आपके excess of ये एक्चुअली वेस्ट ऑफ एनर्जी है, ठीक है. वी नो दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द ओवरऑल, क्योंकि इसका सिर्फ पर्पज यही है टू फाइंड द बेस्ट, ठीक है. एंड दैट हाउ टू फाइंड द बेस्ट, क्योंकि इवॉल्व तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही होंगे ना. सो दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्सुअल एनर्जी. दैट इज व्हाई वन ऑफ द नॉट दैट इज व्हाई बट वन ऑफ द रीजन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ एनर्जी कॉस्ट प्रोसेस.
बिकॉज सच प्रोसेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है, स्पेसिफिकली इन डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म और हायर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एग्स इन स्किन पाउचेस भी है, बेबी पैरिटी भी है, और उसका सिग्निफिकेंस देखो। ये जो है ये एक लीव है, इसने यहाँ पे क्या किए, एग्स रखे और यहाँ पे खुद प्रोटेक्टेड है, खुद बैठ गया। कितना टाइम लगेगा बनाने में, बहुत ही रेयर टाइम लगेगा, ठीक है। ये वाला मैंने आई हैव ट्राई टू रैकोफेरस है, ये काइंड ऑफ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें फोम सेक्रेट कर रहे हैं, ये मड नेस्ट है। ये देखो दिस इज अ रियल डायग्राम, ये कॉइलिंग अराउंड द एग, ये देखो माउथ से सीधे लार्वास निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसने क्या किया, स्किन के अंदर, आई हैव मेंशन दैट पॉइंट, स्किन के अंदर लाइक स्किन की एक फोल्ड ओपन करके और यहाँ पे इसने एग कैरी, ठीक है। ये वी हैव जस्ट मेंशन, इतना सुंदर इसमें भी नहीं है अनुष्का, है ना, बट दिस इज समथिंग इट हैज बीन मेंशन। ये क्या है, फोम और जिलेटिन एग, जूम करके दिख रहा है, इमेजिन दिमाग में रहेगा तो, दिस इज समथिंग जिलेटिनस एग, और उसको वो नीचे की ओर प्रोटेक्ट है सो दैट इट विल नॉट अट्रैक्टेड बाय द इंसेक्ट और सम काइंड ऑफ प्रेडेटर, ठीक है। और ये फोम है, ये देखो कॉइलिंग अराउंड है ना, समझ आ गया। इसका डायग्रामेटिक फॉर्म में ये वाला केस जो है वो ये है, ठीक है। इसमें स्किन ओपन करके दिखाई गई है, इसमें नहीं दिखाई गई है। ये देखो वोकल सैक वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये देखो एग्स रखना है, कॉलिंग अराउंड द एग, समझ आ गया। एक्सेस ऑन द हिंड लिम्स में भी अलग है और बैक पर अलग है, जहां पे आप डायग्राम बना सकते हो वहां बना लेना। उसके बाद सिग्निफिकेंसेस है, अगर सिग्निफिकेंस वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स में आएगा तो यू विल हैव टू इलाबोरेट द सिग्निफिकेंस एज मच एज यू कैन डू। जैसे कि पहला क्या है, कॉलोनाइजेशन ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। पहला तो आप पर्टिकुलर सपोज दैट इफ पेरेंट्स, इफ आवर पेरेंट्स सपोज दैट, या ग्रैंड टू ग्रैंड ग्रैंड टू ग्रैंड ग्रेट ग्रैंडफादर, अगर उन्होंने कोई एरिया कॉलोनाइज कर लिया तो आज वो जमीन हमारी है ना, काइंड ऑफ उनके एंसेस्टर्स की है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ डिसाइडिंग देयर हैबिटेट एंड परफॉर्मिंग देयर निश। So now this is my territory and territory is one of the basic thing to live or the survive, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन, है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन में ठीक है, हमने जिलेटिनस का वाला एग्जांपल मेंशन करा है। डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेशन एंड कैनिबलिज्म, ये भी हमें पता है। पैथोजन एंड फंगल रेजिस्टेंस, दैट आल्सो वी नो। न्यूट्रिशनल प्रोवाइडिंग, और लास्टली आप लिखोगे सर्वाइवल, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, और सेवेंथ लिखोगे आप इसमें बेटर सर्वाइवल, जो हमने पहले ही डिस्कस किया। वो तो ऑब्वियस हो गया, वो तो मेंशन करने की, ठीक है। पेरेंटल केयर में कोई डाउट ऑनलाइन, एवरीवन एनी डाउट इन द पेरेंटल केयर? अगर हम लोग ओके, इफ यू आर गोइंग टू डिक्टेट इट दैट सिंपल अमाउंट ऑफ टाइम, कितना हो गया, 40 मिनट्स अराउंड, ठीक है। टुडे आई एंटर्ड लेट इन द क्लास, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर अगर कंसीडर करें, हाफ एन आवर भी नहीं, 20 मिनट्स इफ यू कंसीडर, तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 an hour, ठीक है। सो आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, टॉपिक इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक द हेडिंग। Online, every one of you, please break this word, and everyone either the unmute your mic or comment what is the meaning of this word. You two guys, बताओ अनुष्का, what is the meaning of this? Now tell me. Start writing about the what is the meaning or the terminology मतलब. Have you heard this word pedo before? कहाँ पे सुना है? चाइल्ड में, चाइल्ड के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल द डॉक्टर ऑफ चाइल्ड? गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, राइट, मतलब बच्चों का डॉक्टर। मॉस मतलब कौन, ठीक है। देखो आपके सिलेबस में द थिंग इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस इज अ पीडोमॉर्फिस, दैट्स इट,
but they actually give the question from the pedomorphosis and the neoteny. ठीक है. First we'll understand the concept of the pedomorphosis, then we'll connect it through that neoteny. Pedomorph मतलब child form, child का form, ठीक है. तो ह्यूमन में हम लोग बोलते हैं इट लुक लाइक द चाइल्ड, समवन इज लुक लाइक द चाइल्ड, है ना. बट इसमें दे डू नॉट लुक लाइक द चाइल्ड बट आल्सो दे एक्चुअली आर द चाइल्ड. ठीक है. पीडोमॉर्फोसिस एक होता है जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट दैट full life span of the amphibians. So first they lay the eggs, then eggs convert into the larva, then larva convert into the adult. ठीक है. Then larva convert into the adult. Various modification such as gills ka, limbs ka, sexual reproduction, every kind of thing. Then it is converting into the adult. In one of the class, I have already said that in the animals, adult का मतलब क्या होता है? To attain the sexual maturity if something is not specified. जैसे कि if we talk about the amphibians में the meaning of the adult is not only the attaining the sexual maturity but also going from that aquatic से आपका terrestrial habitat में, because that's a complete change. Suppose that if we talk about the snake, है ना, how do we say that the snake is adult or the snake is a mature or that is kid? Either the size like body shape, body size or simple. एक हम लोग उसी तरह बोल सकते हैं by only appearance और actually जो genetically मतलब है वो उसका sexual maturity. ठीक है. So because snake का either the child form or the adult form both are living in the same terrestrial habitat, but इसमें ऐसा नहीं है. सो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो कि इसमें पीडो मतलब चाइल्ड फॉर्म में सस्टेन है. तो इसमें दो एनिमल्स हैं, एम्बाइस्टोमा, एम्बाइस्टोमा. ठीक है. व्हाट हैपेंस इन दैट, उसका जो लार्वा होता है दैट इज नेम ऑफ एक्सोलोटल लार्वा. I'll show the diagram also. So exolotal larva is one of that intermediary stage. Exolotal larva is properly your aquatic form and ambiostoma is properly your terrestrial form. ठीक है, कायदे में हो जाना चाहिए. But pedomorphosis says that exolotal larva में in that even larval stages. What is the difference between that amphibian larva? इसमें क्या होंगे? Gills होंगे और क्या होगा? वाटर में रह रहे होंगे. So even in that stage with the presence of the external gills, because it was trying to convert into that adult. ठीक है. तो गिल्स इसके गायब होने थे, मतलब सबस्यूम होने थे, but because it into that even larval stages it attained the sexual maturity. It attained the sexual maturity. तो वो अडल्ट तो बन गया है ना, बट अभी भी इवन इन दैट इट्स हैबिटेट और इवन दैट इट्स द फिजिकल और द इंटरनल मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, इट अटेन द मैच्योरिटी. ठीक है. दैट इज कॉल्ड द पीडोमॉर्फोसिस. मतलब अडल्ट है, ये कन्वर्ट हुआ. अडल्ट क्यों है? बिकॉज इट इज हैविंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी, बट उस अभी भी ये है क्या? चाइल्ड. दैट इज कॉल्ड चाइल्ड फॉर्म ऑफ द एम्फीबियन. दैट्स इट. सो सपोज दैट इसकी जो लाइफ स्पैन होगी, ठीक है, सपोज दैट इफ यू कंसीडर अम्बाइस्टोमा की लाइफ स्पैन सपोज दैट 20 years. ठीक है. और सपोज दैट इफ यू टॉकिंग अबाउट दैट एक्सोलोटल लार्वा will survive for that for the sake of 2 years to 8 years, like it's a random world. ठीक है. तो after 8 year it has to move and convert and go to the terrestrial land, right? But still even in your 10th year, 11th year, 12th year, 15th अगर कंसीडर करें तो उसमें भी ये कहां पर रह रहा है? एक्वाटिक में ही रह रहा है. ठीक है. एक्सोलोटल लार्वा इज स्टिल लिविंग इन दैट एक्वाटिक फॉर्म, बट it attain the adult characteristics, that is sexual maturity. मतलब वहां पे ये sexual maturity करके न्यू स्टेज आपकी डेवलप कर सकता है, न्यू पॉपुलेशन इट कैन डेवलप. Very initially when it was not discovered that much, it actually considered that exolotal larva is a different organism. ठीक है. बहुत सारे टाइप के पीडोमॉर्फोसिस होते हैं. Then we talk about that neoteny. पहले पीडोमॉर्फोसिस. No, it is not going to that. Terrestrial habitat. ठीक है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच आर इंपैक्टिंग दिस एक्सोलोटल लार्वा. ओके, सो इफ यू आर कंफ्यूज दैट मैम फिर एम्बास्टोमा बना कैसे, इफ यू आर कंफ्यूज लाइक नॉट ऑल द एम्बास्टोमा. अगर सपोज दैट ये लार्वा बना आफ्टर दैट लेइंग और हैचिंग ऑफ एग्स, इट बिकम कन्वर्ट इनटू द एक्सोलोटल लार्वा. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे कि व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट द मेटामॉर्फोसिस इन द इंसेक्ट्स, रिमेंबर वी टॉक अबाउट द वेरियस हार्मोन्स, राइट? तो इसी तरीके से इसमें भी मल्टीपल फैक्टर्स आर प्लेइंग द रोल, जैसे कि थायराइड, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि सैलिनिटी,
if that particular kind of it is even the it is even the way of the evolution. मान लो the axolotl larva, मान लो suppose that the conversion of that axolotl larva to adult requires your 25 degree Celsius temperature. ठीक है, how it is a concept of the evolution. Suppose that it requires the 25 degree Celsius, but वहां पे क्या हो गया, ice age आ गई या पानी for whatever reason it become cold and क्या हो गया यहाँ पे, the temperature reduced to around 8 to 10 degree Celsius. ठीक है, तो ये axolotl larva will not able to convert into the adult, right? But this axolotl larva has to have survive, है ना, and need to maintain their population. कैसे करेगा, समझ आया? So not all the, so on the basis of that when we connect Neoteny as actually the form of the pedomorphosis. अभी हम लोग Neoteny भी करेंगे, ठीक है? Neoteny is actually the form of the pedomorphosis, ठीक है? और क्या बोल रहे थे, हाँ, it is actually mainly of three types. तो अगर ये जो pedomorphosis या Neoteny, if it is a permanent, then even when the temperature will convert, will come again to the 25 degrees Celsius. If it will be permanent type of pedomorphosis या Neoteny, then it will not convert into the adult. It will not go into the terrestrial land. ठीक है, but some type of, इसमें हम लोग three type पढ़ते हैं, complete, non-complete और intermediate. But certain kind of this kind of development can be reversible. So अगर 10 से 25 चला गया, so this axolotl larva will come again to the adult even after attaining the sexual. ठीक, तो उस basis पे हम लोग इसके types पढ़ते हैं. Okay, any doubts? Online students, any doubt in the pedomorphosis child form? When I'll explain it, when I'll dictate it, you guys will understand that. Every one of you. Any doubt in the pedomorphosis? Yes, Manisha, do you want? Achha, no, ma'am. Fine. Rajkumar, Surbhi. Okay. Sorry. चलो, let me get it. Pedomorphosis. अभी कंफ्यूज नहीं होना जब तक हम लोग pedomorphosis एंड न्यूटेनी दोनों नहीं कर लेते, ठीक है? I'll show you the question also that how separately the question came. Okay, write down pedomorphosis. Heading down pedomorphosis in amphibians. In amphibians. The term pedomorphosis, that the word, the pedomorphosis is made up of two words, ब्रेक करके लिख लो. पीडो मीन्स चाइल्ड, मॉर्फोसिस मतलब, मॉर्फ मतलब फॉर्म, मॉर्फोसिस मतलब प्रोसेस, है ना? मॉर्फ लिखना, MORPH मतलब फॉर्म. That means during the development, the phenomena of attainment of sexual maturity or the development of adult which arrested in which development of adult in which the growth is arrested in the larval stage. What is the meaning of the second line? जैसे कि suppose that again if we talk about here, this larva is converting into the adult. ठीक है? If the condition is that much harsh, जैसे कि we know that some of the, even any organism can be sterile.
right? Why any person can be sterile? Because of some chemical lochas, है ना, कुछ तो abnormality होती है. Abnormality means suppose that the particular suppose that if we talk about the sex hormones or that sex determining hormone, gonadotropic hormone, suppose that take off that gonadotropic hormone. So ultimately gonadotropic hormone GnRH, gonadotropic releasing hormone, it is ultimately it's about some kind of chemicals, है ना, कुछ भी है, CHO है, ultimately CHO N और S है, सब कुछ यही है, या फिर PBR कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है. दैट मीन्स केमिकल एलिमेंट. अगर इनका फॉर्म, जो भी आपका गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का जो भी फॉर्मूला होता होगा, इफ दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स विल नॉट अरेंज प्रॉपरली, है ना, एंड कुड नॉट एबल टू फॉर्म दैट गोनाडो रिलीजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, देन व्हाट विल हैपन? द गोनाड्स डेवलपमेंट will impact, or maybe suppose that we must have seen that some of that stunted growth child people, है ना, हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं, या some of that acromegaly, that's a very larger growth or very smaller growth, है ना. So that kind of growth, that does not mean they do not have developed the gonads or the sexual reproduction, but yes it impacts. That means the second lining of that कि उनको जब adult में convert हो रहे हैं, so some of the characters will arrested in that larval stage only. Maybe it can be their height, maybe it can be the gonado development, because this is a major two thing in your animals, ठीक है. या तो उनकी height increase हो रही होगी, then you can suppose that how can you say this is a small snake and this is a larger snake by saying just the height, ठीक है. Accordingly उसके जैसे कि suppose that if we see the छोटू सा earthworm, of course उसके 14, 15, 16, 17, 18 पे वो gonads develop नहीं होंगे, है ना, but as soon as it is converting into that adult उसकी gonad develop हो गए होंगे. So sometimes during that conversion of larva to adult, its growth is arrested because of, again it is because of so many factors, the temperature, the pH, the salinity, the thyroid hormone, both internal and external, ठीक है. So pedomorphosis is an umbrella term, ठीक है. Whatever the reason, whatever the impact, the ultimate result of the pedomorphosis will be the child form of the adult, that's it, ठीक है. बच्चे के फॉर्म में वो दिखेगा, या स्टंटेड ग्रोथ हो गई होगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी अरेस्ट हो गई होगी. सेकेंड लाइन का मतलब यह है कि अडल्ट बन गया है, ठीक है, बट सेक्सुअली मैच्योर सपोज दैट नहीं हुआ, ठीक है. तो ये भी इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? चाइल्ड फॉर्म ही कंसीडर करेंगे, बिकॉज अगेन आई हैव सेड दैट टू अटेनमेंट ऑफ द सेक्सुअल, टू अटेनमेंट ऑफ द अडल्ट, sexual maturity is one of the basic thing in the animals. Got it now? Second statement. Next slide on. The pre-adult stage is called pedogenesis. The formation, the pre-adult stage formation or development is called pedogenesis. Pedogenesis. This was first introduced by von Baer in 1886. In 1886. Next add-on. The pedomorphosis is retention of ancestral juvenile characters in the late development stage. In the crux of the definition, any one of the character, if it is sustaining into the adult, that's called the pedomorph. अभी easy understand करना, हाँ, लिख लो. Any of the characters, if it is sustaining into the adult, that is called the pedomorph.
लास्ट पॉइंट क्या लिखा था हमने? कैरेक्टर्स इन द लेट डेवलपमेंटल स्टेज, बस। लिख लियो। लेट डेवलपमेंटल स्टेज, उसी में कंटिन्यू करो, और मोर स्पेसिफिकली इन द अडल्ट बॉडी, और मोर स्पेसिफिकली इन द अडल्ट बॉडी। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट राइट आउट। स्टाफ रख के जस्ट मेंशन करना है, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि मैम इधर तो हमने नियोटेनी बताया ही। राइट इट डाउन। स्टाफ रख के एक पॉइंट, नियोटेनी, नियोटेनी is is specific type of pedomorphosis, is a specific type of pedomorphosis. ठीक है, नेक्स्ट गैस्ट्राइन, नेक्स्ट लाइन पे लिखना गैस्ट्राइन, गैस्ट्राइन proposed the term pedomorphosis in 1928. Gastrange proposed the term of pedomorphosis in 1928. Next, pedomorphosis can be of mainly two types. Pedomorphosis can be mainly of two types. Right, like that. Obligative and facultative. Obligative and facultative. Write down obligative pedomorphosis. Obligative pedomorphosis. Have you heard this word earlier in anywhere? Yes. What is the meaning of the obligate parasites? Okay. According to the situation. Okay, so you are actually know the real term, but a little bit improvement is required. So obligative मतलब suppose that if we saying that obligative parasites, या फिर हम लोग बोल रहे हैं obligative respiration, है ना? Obligative aerobic respiration or anaerobic respiration, है ना? तो obligative parasites are those parasites which complete their life cycle in the host or in the parasitic form completely. Doesn't matter in the one host or the two host, है ना? जैसे कि टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम विल कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, कंप्लीटली लाइफ साइकिल आपका होस्ट में ही सर्वाइव करेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट द फैसियोला हेपाटिका, सो फैसियोला हेपाटिका आधी लाइफ अपनी ह्यूमन में कंप्लीट करता है, देन सम लार्वल स्टेज विल कंप्लीट इनटू द ओपन ग्राउंड, है ना, ग्रासलैंड एंड ऑल, फिर आधी लाइफ अपनी किसमें कंप्लीट करता है? फिर होस्ट में। सो दैट मीन्स इट्स पैरासाइट्स इज अ वेन वर्ड, जिस भी वर्ड के साथ में ये यूज होगा, सपोज दैट ऑब्लिगेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन, सपोज दैट इफ यू आर सेइंग दैट ऑब्लिगेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, मतलब एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, जैसे कि ह्यूमन, ह्यूमन कैन रेस्पायर ऑब्लिगेटली, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, राइट, इट्स अ काइंड ऑफ कॉमन वर्ड दैट यू विल रेस्पायर ओनली एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स इट। बट फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन में अगर हम लोग बात कर देंगे, सपोज दैट बैक्टीरिया, दैट मीन्स दे कैन रेस्पायर इन द ऑक्सीजन, बट इफ द ऑक्सीजन विल नॉट प्रेजेंट, दे विल सर्वाइव एंड कैन रेस्पायर एनारोबिकली ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब होता है कंप्लीट, जो भी इसके वर्ड आगे, जो भी वॉट एवर द टर्मिनोलॉजी विल बी एडेड, उसका मतलब कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसमें अब तो उसका मतलब समझ आ गया होगा। सो ऑब्लिगेटिव पीडोमोर्फोसिस मतलब इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू दैट पीडियाट्रिक फॉर्म, चाइल्ड फॉर्म, तो फुल लाइफ में वो वही रहेगा। फैकल्टेटिव में मतलब इट कैन आल्सो रिवर्स द प्रोसेस, राइट। ऑब्लिगेटिव पीडोमोर्फोसिस, some species of urodales, some species of urodales the larval stages always remain
the larval stages always remain in the life cycle, in the life cycle, or or in permanent form, or in permanent form. Next point. They do not undergo metamorphosis completely anytime. They do not undergo into metamorphosis completely. They do not undergo into metamorphosis completely, comma, any time. Any time. Next. These can be, there can be actually, there can be the various reason for for arresting the larval stage permanently, arresting the larval stage permanently in its complete lifespan, in its complete lifespan, as also present in adult form, as also present in adult form. But one of the major reason is, but one of the major reason is that the developing tissues of larva, the developing tissues of larva. Acha, tell me just a random guess. Key external factor will impact more or internal factor will impact more for that obligative kind of metamorphosis. Why? That is a kind of permanent. Internal, so it can vary time to time. Yes, very good. I know. Developing tissues failed to respond to thyroid hormone T4. Thyroid hormone T4 लिखना. T4. As in larval form during metamorphosis, as in larval forms, thyroid played major role in metamorphosis. Thyroid hormone plays important role in metamorphosis. Full stop. The genes for the transformation into adult, the genes for the transformation into adult sometimes become suppressed, and do not respond for the growth hormone, and do not respond for the growth hormone. And require रहने दो, hormone full stop. Example, population of Cryptobranchus aligenesis. Example, population of Cryptobranchus aligenesis. Cryptobranchus aligenesis retain a single gill slit. Retain a single gill slit which is present in the larval feature. Comma, into the adult form too. Comma, into the adult form too. तो सिंगल गिल स्लिट जो है वो लार्वल फॉर्म है, बट स्टिल इट्स प्रेजेंट इन द अडल्ट बॉडी. ठीक है, अडल्ट फॉर्म 2. नेक्स्ट इसी में लिखो एम्फियूमा स्पीसीज. एम्फियूमा स्पीसीज of United States
have no external gills, have no external gills in adults, in adults, but but presence of एक्सटर्नल गिल्स लिखा है ना, स्लिट्स तो नहीं लिखा है ना, एक्सटर्नल गिल्स ठीक है हाँ, बट प्रेजेंस ऑफ लार्वल गिल स्लिट्स इन अडल्ट बॉडी, बट प्रेजेंस ऑफ लार्वल गिल स्लिट्स इन अडल्ट बॉडी. These type of pedomorphosis, next point last, these type of pedomorphosis, this type of pedomorphosis is a permanent one, is a permanent one as they have vestigial limbs and absence of eyelids, and absence of eyelids because even in adult even in adult metamorphosis cannot be introduced by T4 or thyroid hormone because it is genetically fixed because it is genetically fixed. ठीक है, आगे समझ में. नेक्स्ट मेक द हेडिंग फैकल्टेटिव पीडोमॉर्फोसिस. फैकल्टेटिव पीडोमॉर्फोसिस, some species of Urodale such as ambiostoma, ब्रैकेट में लिखो, एक्सोलोटल लार्वा, ब्रैकेट में एक्सोलोटल लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा and Tritius, Tritus, and Tritius exhibit facultative metamorphosis, exhibit facultative pedomorphosis, where the larva becomes sexually mature and breed, but physically मतलब physical appearance wise, ठीक है, physically they can go into metamorphosis and convert into adults. So in short, what does that mean? Because they feel that maybe जैसे कि लार्वा हुआ, ठीक है, एग हुआ, एग से द कन्वर्जन ऑफ लार्वा, एंड लार्वा से क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ अडल्ट, ठीक है. सो इन दैट लार्वल स्टेज दे विल अगेन द सेक्सुअल मेच्योरिटी, ठीक है. मतलब सपोज दैट अगर इसका प्यूबर्टी या मतलब रिप्रोडक्टिव पीरियड सपोज दैट इन द 15 इयर्स ऑफ एज मान लो 7 इयर्स है या मान लो 6 इयर्स है, ठीक है. सपोज दैट जैसे ये लार्वा जो है ये एनिमल 6 इयर्स में इट कैन एबल टू प्रोड्यूस द बेबीज और वो कर सकता है, ठीक है. सो अभी लार्वल की स्टेज सपोज दैट 2 to आपकी 5 इयर्स चल रही है, ठीक है, ये इन बिटवीन दैट 2 to 5 इयर्स है. सो व्हाट इट विल डू, मे बी इन दैट थर्ड ईयर ऑफ इट्स लाइफ it will start producing the breed, it will start doing the breed because it become converted into that sexual maturity, ठीक है. Why such kind of things happen? Because such kind of organism
अगेन मे बी बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन. देखो क्यों हो रहा है ये, क्यों, व्हाट इज द नीड ऑफ टू बिकम द सेक्सुअली मैच्योर इवन द लार्वर स्टेज. अगेन एक छोटे से 10 साल के बच्चे को व्हाट बिकम द नीड टू स्टार्ट अर्निंग, क्योंकि मे बी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, मे बी उसके पेरेंट्स नहीं है ना, वॉट एवर, मतलब उसको सर्वाइव करना है. ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट इज हियर. सो व्हाई द नीड ऑफ द लार्वा टू बिकम सेक्सुअल मैच्योर, मे बी बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन. ठीक है, वो स्टार्ट कर देता है रिप्रोड्यूसिंग करना एंड ब्रीड करना, बिकॉज दैट इज अ वे टू मेंटेन इट्स पॉपुलेशन, राइट. बट व्हाट हैपन आफ्टर द फेवरेबल कंडीशन कम्स, इट मे कन्वर्ट इनटू अदर्स और इट मे नॉट, डिपेंडिंग. ठीक है, कन्वर्ट हो भी सकता है, तभी भी सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा. मतलब जैसे कि पहले के टाइम पे जो प्यूबर्टी की एज, मतलब ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर, तो वो मे बी 15-16 से, अभी के टाइम पे वो 10-11 हो चुके बिकॉज ऑफ वेरियस फूड एंड एनवायरमेंट. ठीक है, दैट्स अ कांसेप्ट. फैकल्टी समझ आ गया. सो इट कैन बी रिवर्सिबल और कैन नॉट बी, नॉट मैंडेटरी बिकॉज इट इज नॉट जेनेटिकली फिक्स्ड. मतलब इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए आरएनए सच का मतलब द टिश्यूज आर रिस्पॉन्डिंग, है ना, टिश्यूज विल बी गोइंग टू रिस्पॉन्ड. इंटरनली पहले से फिक्स्ड होके नहीं आया है कि इन दैट 3 years of age you will convert into the sexually mature, while obligative में it is fixed earlier कि ठीक है in that 3 years of age, even in the in that 15 years में, even in your 12 years of age maybe you will not be sexually mature, maybe still in that adult stage you will show that gill slits. जैसे कि ह्यूमन में कंसीडर करो, किसी की टेल बोन अभी भी प्रॉपरली विजिबल है ना, बहुत सारे वेस्टिजियस ऑर्गन कैन बी प्रॉपरली डेवलप्ड इन दैट ह्यूमन आल्सो, बिकॉज दैट इज फिक्स्ड जेनेटिकली. maybe in that particular series of that hereditary, वो वाला कैरेक्टर अभी सबस्यूम नहीं हो पाया है. गेट इट? एनी डाउट? प्लीज इफ कोई भी डाउट है तो बता दो. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल वे. अनुष्का, एनी डाउट? शिवम, पक्का? ये इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो जेनेटिकली फिक्स्ड है, दैट्स इट. इन्वायरमेंटल कंडीशन कैन बी रिवर्स्ड व्हाइल द जेनेटिकली फिक्स्ड कैन नॉट बी. हम रिसर्च करने बैठ जाए तब कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. कह सकते हैं, हाँ 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 कह सकते हैं. जैसे कि सपोज दैट इफ यू टॉक अबाउट दैट डॉफिज्म, है ना, तो हमारा जो जीएनआरएच है, जीएनआरएच नहीं, जीआरएच है, ग्रोथ रिलेटिंग हार्मोन व्हिच इज सेक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. जैसे इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को बचपन में सर पे नहीं मारना चाहिए, बिकॉज दैट इज योर डेवलपमेंटल स्टेज. तो मे बी इफ इट इज इम्पैक्टिंग द पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस इज इम्पैक्टिंग द पिट्यूटरी, मे बी इफ द ग्रोथ हार्मोन जीएच इज रिलीजिंग लेस, है ना, या पिट्यूटरी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ गया, तो वो बच्चा स्टंटेड रहेगा. बट अगर डॉफ पेरेंट्स के बेबीज भी डॉफ है, सो देन इट इज अ ऑब्लिगेटिव. समझ आ गया एवरीवन? राइट नो. क्या लगा लास्ट? क्या लिखा? अच्छा, when the available condition, when the unfavorable conditions are changed, when the unfavorable conditions are changed to favorable one, to favorable one. Sorry. Next point, they are not permanent, they are not permanent larva, not permanent larva, such as like नेक्ट्यूरस. नेक्ट्यूरस पे 10 मार्कर का अलग से क्वेश्चन है. इट इज ऑल्सो नोन एज मड पपी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 या 24 में किसी एक साल में. सो इट विल जस्ट मेंशन वो 10 मार्कर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 दे विल गिव द नेक्ट्यूरस. दैट्स इट. व्हाट इज नेक्ट्यूरस, व्हाट यू नीड टू राइट अबाउट द नेक्ट्यूरस, दैट मीन वो पूछना चाह रहे हैं कि नेक्ट्यूरस इज फेमस फॉर व्हाट. देन यू हैव टू राइट कि ठीक है, समथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूटेनी और द पीडोमॉर्फिज्म. ठीक है, नेक्ट्यूरस ब्रैकेट में लिख लो मड पपी. मड पपी कॉमन नेम है इसका. एंड प्रोटियस, नेक्ट्यूरस एंड प्रोटियस. Next I know. In this case, the tissue respond to thyroid hormone. The tissue respond to thyroid hormone and induces the metamorphosis. And induces the metamorphosis. Full stop. When they remain in aquatic condition, when they remain in aquatic condition,
They possess external gill slits. They possess external gill slits, and median dorsal fin and median dorsal fin, and at the same time, they're able to reproduce. They're able to reproduce, but but as the water dries up, but as the water dries up, and environmental condition changes, and environmental conditions changes, these larvae, these larvae with sexual maturity, with sexual maturity, convert into adult, convert into adult, and lose its larval feature, and lose its larval feature. समझ आ गया? हाँ. देखो, ये है न्यूटेनी एंड एम्फीबियंस. व्हाट इज न्यूटेनी एंड एम्फीबियंस? पीडियोमॉर्फोसिस में अगर किसी को डाउट है देन आई डिक्टेट इट, अदरवाइज द सेम कांसेप्ट इट इज. बट जैसे कि व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट द पीडियोमॉर्फोसिस, राइट? सो वी हैव इन शॉर्ट, इफ वी टॉक अबाउट that whatever the juvenile character that will remain in the adult, either in a permanent, that is called the obligative, in a temporary form it is called facultative. But when we talk about that juvenile character, there are multiple juvenile characters. So we will pick one or two. So what are that one or two? Majority of things is your, either there will be sexual maturity and the presence of the external bliss. Majority two things. ठीक है? अगर हम in that juvenile character में दो specific चीज को choose कर लेंगे, if you choose, then it is called the Neoteny. That's it. That is one Neoteny is a specific type of pedomorphism. ठीक है? देखो यही लिखा है. If you will not understand any one of you, I'll explain it in a very slow way. Okay? The concept of Neoteny was first introduced by Walter Gastroid in 1922. ऐसा कुछ नहीं है कि जो पीडीएफ फॉर्म में है वो कंसाइज है या समथिंग, इट विल बी इन दैट एलाबोरेटेड फॉर्म. इसको मैंने क्यों दिया? बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड. देखो बाय लुक यू कैन अंडरस्टैंड. जैसे कि द बॉडी इट अपीयर्स इन द अडल्ट, है ना, इट डजंट लुक लाइक द लार्वल वन, राइट? बट इट डज हैव दैट. ये ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, व्हाट इट इज? External gills. That means even becoming the adult, it is carrying that its larval feature. That is your Neoteny. ठीक है? It is specific type of pedomorphosis. It is a term developmental biology. Development पे हम लोग पढ़ते हैं. So when we cover the developmental biology, जैसे कि if we talk about that HXL gene, या हटाओ इसको. Okay, in that facultative or obligative, what do you think, guys? Every online plus first you answer please. So in that facultative or obligative, what do you think during that evolutionary changes or the evolutionary period? Which came first, the facultative or the obligative? Anushka, online, please answer everyone. I'll just wait. Why? Rohit, Rajkumar, Manisha is typing. Please answer. In that evolutionary development, which came first, the obligative one or the facultative one? Explain it. Rajkumar, please answer. Why obligative, Shivam? Yes. No. Yes. Someone is explaining because it was temporary. Okay. So we have heard that SXL gene. Have you heard that? No, I'm not sure. Okay.
So accessor gene is one of that gene. Everyone who has answered the facultative, it's correct. Rajkumar, but you don't answer, ना? Last में भी नहीं आना है. So facultative is first one. जैसे कि when we talk about that accessor gene, Shivam. So accessor gene is one of that gene which is responsible for that, subsuming of that limbs of the snakes. ठीक है. तो क्या हुआ था इनिशियली, क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट दैट मेंडल एंड सो मेनी थ्योरीज ऑल्सो, कि लामार्क की, डार्विन की, हम लोग बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात करते हैं. सो उसमें देयर इज अ वन थ्योरी, ऑर्गन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. ऑल्दो लामार्क हैज गिवन दिस यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. ठीक है. लामार्क की फाइनल थ्योरी वाज नॉट सपोर्टेड. जैसे कि वी टॉक अबाउट द ज्योग्राफी में वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट. देन वी टॉक अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. द मोस्ट एक्सेप्टेड इज योर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना. बट whatever the evidence is given by the continental drift theory, that is good, but continental drift theory did not talk about, did not tell the reason behind that movement of, but उसका proof गलत नहीं है. Similar thing happened with the Lamarck and Darwinism, although कुछ points Lamarck के गलत ही थे. Okay, so initially what happened, जब ये use and disuse of organ में क्या बोलते हैं कि suppose that एक snake है, उसको burrow में रहना था because the environment was changing, temperature becoming high, so they had to go and form the burrow. So in the forming of the burrow from the reptiles, the limbs were creating the hurdle. So gradually there's a disuse of organ. ठीक है. Although ये theory proof नहीं हुई थी क्योंकि माउस का वो बार बार कट करके देखा गया था. That's one of the different concepts when we talk about the evolution or genetics, and we talk about here. But किसी भी चीज का evolution if we talk about, इसी theory को हम लोग prove कर सकते हैं. The Darwin finches. What is the Darwin finches? They have moved to the Galapagos Island, and because of, according to their necessity, right. Initially everyone was living on that tree and everything, है ना. Tree dry हो गया या crop nearby area में लोग crop grow करने लगे, है ना. Resources vary करने लगे. So because of the resources becoming vary and it will become more, तो जो population ने, जो birds की जो different आपके different Darwin finches हो गए, and they are particularly forming the different species too, right. So why? Because their habitat, their feeding habitat changed. कुछ लोगों ने क्या किया, फ्रूट खाने लगे. कुछ लोगों ने क्या किया, बिकॉज द फ्रूट और द वेजिटेबल्स वर डिक्रीजिंग, सो दे स्टार्टेड फीडिंग ऑन द इंसेक्ट्स. सो अकॉर्डिंगली उनकी बीक मॉडिफाई हुई. ठीक है. सो सिमिलर कॉन्सेप्ट इज दिस. एक्सेसिव पहले तो ट्रायल हुआ होगा ना शिवम. फैकल्टेटिव तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रायल. सपोज दैट कुछ हुआ होगा कि वाटर में द कंडीशन वाज नॉट देयर, तो एनिमल रिस्पोंडेड इन दैट वे कि ठीक है ऐसा करते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी पहले कर लेते हैं बिकॉज आई हैव टू सर्वाइव. But again, when the water become dried up, they convert into the adult. ठीक है. ये कैरेक्टर परमानेंटली जेनेटिक कैरेक्टर में फिक्स होने के लिए इट टुक दैट टाइम. ठीक है. ऑब्लिगेट इज समथिंग योर परमानेंट, मतलब एक न्यू स्पीसीज ही आपकी बन रही है, अ काइंड ऑफ. ठीक है. समझ आ गया एवरीवन? यस, whoever answered is absolutely correct. चलो, तो इसमें क्या है, that describes the evolutionary changes. इसीलिए इसी वर्ड के पहले I have this stop that in the organism which result in the retention of the juvenile character into adult life. Many species show neoteny and this and that. Neoteny pedogenesis. Exactly यहाँ पे देख लो क्या है. Neoteny in which neoteny is in the which the organism in the juvenile stage and physiologically somatic growth slows down, while in pedogenesis the larva of organism attain sexual maturity. So what is the difference between both? Again, if we talk about that 15 years of time, और larval की stage suppose that 2 to 5 years है, so 2 to 5 years के बाद as soon as it entering into the 6th year of stage, right, it will of course start developing the sexual normal condition. Neoteny में क्या होगा? Neoteny में ये 2 to 5 खत्म होके, क्योंकि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है. तो मे बी अभी क्या होगी, लार्वल स्टेज 2 to 5 की जगह 2 to 7 और 2 to 8 ईयर्स. ठीक है. पीडोजेनेसिस में लार्वल स्टेज स्लो डाउन नहीं होती है, उसको चाहिए कन्वर्ट करना है तो करना है. दैट्स वन ऑफ द. ठीक है. Therefore, neoteny is featured as a retarded growth. Therefore, neoteny is featured as a retarded growth and pedogenesis is accelerated. लार्वा में सोमैटिक लार्वा में सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलपमेंट होना इज एक्सेलरेटेड ग्रोथ. लार्वल स्टेज ही स्लो डाउन होना to try to survive in that condition is a retarded growth, है ना. अरेस्ट हो गए काइंड. अब आगे समझ में डाउट तो नहीं है. ये लास्ट स्टेटमेंट बहुत क्लियर आपको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ न्यूटन में वही है, कंप्लीट है, पार्शियल है और जैसे कंप्लीट, पार्शियल और ऑब्लिगेटिव. ऑब्लिगेटिव में सपोज दैट इफ आई टुक
द एक्सोलेटल लार्वा और मड पपी इन द लैब, है ना, और मैं उसमें इंट्रोड्यूस करूं कि ऐसा करते हैं, थायराइड हार्मोन इज वन ऑफ दैट हार्मोन व्हिच कैन इंड्यूसेस सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट। सो अगर मैं थायराइड का इंजेक्शन लगा दूंगी तो वो स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली मुझे जैसा चाहिए, दैट इज इंड्यूसिबल, दैट्स अ काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, नॉट इन द नेचुरल। ठीक है, इंड्यूसिबल ऑब्लिगेटिव, देखो इसीलिए इसीलिए इन दैट पॉइंट इसमें दोनों लिखा है, इंड्यूसिबल ऑब्लिगेटिव और क्वासी परमानेंटली न्यूटेनी, दिस इज आल्सो कॉल्ड द फैकल्टेटिव न्यूटेनी, can be introduced by manipulating the thyroid function and depends on that environmental factors. Physiology of the larva development stage, larva does not metamorphose into adult in certain specific natural condition, natural condition ही आपकी यहाँ पे when we talk about that why these things all the things happen, then we talk about that external and internal factors। ठीक है, जितनी भी ऑब्लिगेटिव चीजें होंगी वो आपकी कैसे होंगी, इंटरनल वन में होंगी, और जितनी भी इंड्यूसिबल होंगी या फिर फैकल्टेटिव होंगी दैट विल बी योर एक्सटर्नल। ठीक है, चलो, attain sexual maturity but the metamorphosis can take place after artificial treatment or suitable natural condition. A myostoma mexicans in extremely cold temperature individually may remain aquatic, बहुत कोल्ड हो जाता है तो लैंड पे ज्यादा फील होगी, आइस में वाटर में क्या होता है ऊपर एक आइस की लेयर जम जाती है और वो इंटरनली दे कैन सर्वाइव। ठीक है, एंड रिटेन द लार्वा कैरेक्टर्स इवन इनटू द adult। ठीक है, due to that inhospitable existence of the terrestrial habitat but if environmental conditions changes it can be changes into the adult। ठीक है, ये छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है कैसे चेंज हो रहा है इंडिजिबल एंड ऑल। देखो इसमें व्हाट वी ओके में देखो what we are doing, majority of your hormones which are impacting the growth, these are your hypothalamus, pituitary and thyroid, बस उसी में आपको चेंजेस करने हैं, ये एक्सपेरिमेंट बनाने की जरूरत नहीं है प्लीज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो दैट टू मेक इट मोर इजियर। ठीक है, एम्ब्रियो लार्वा ये वो दिन है, ये प्रॉपर एक स्टेज है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू दिखाया गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूटेनी में ऑब्लिगेटिव न्यूटेनी एंड फैकल्टेटिव, सेम एज योर पीडोमॉर्फोसिस। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स का एक्सट्रिंसिक फैक्टर में टेम्परेचर, डीप एंड कोल्ड वाटर इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद हाई माउंटेन पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज इंडिविजुअल, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ, बहुत जल्दी भी हो जाएगा अगर सपोज दैट अगर लार्वा से अच्छा अगर आपने फुल 12th तक पढ़ाई करी है ना प्रॉपर, लाइक आपने लीप नहीं किया है क्लास में कि आप 2 पढ़ा फिर 6 पढ़ा सीधे, ऐसा सम ऑफ द पीपल डू दैट, सम ऑफ द पेरेंट्स अलाउड टू डू दैट। ठीक है, सो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होता है ना, व्हाई वी आर डिस्कसिंग सच थिंग इन द क्लास, वी डू नॉट लीप द concept or any topic, so if you are like understanding the concept here, so whatever the thing will come, so that means we are taking that 6 months of period to understand the whole syllabus। ठीक है, सो अगर अभी कभी इन्वायरमेंटल चेंज भी होगा तभी भी यू कैन एबल टू सर्वाइव। ठीक है, तो वही वाला काइंड ऑफ सिनेरियो है। तो लार्वा इन हाई माउंटेन इसमें क्या करते हैं, ये लीप कर जाते हैं, है ना, इसको कंसाइज कर दोगे, सपोज दैट अगर मैं बोलूं मैं 2 महीने में आई विल जस्ट कंप्लीट द सिलेबस इन 2 मंथ, है ना, तो मतलब आप वो आपकी जो सेक्शुअल आपकी जो मेच्योरिटी होनी चाहिए टू राइट द परफेक्ट आंसर, देन यू विल नॉट गेट इट बट यू थिंक दैट यू विल गेट इट, है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ फॉल्सिफिकेशन। उसका समझ आ रहा है, पक्की बात। तो आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स में था टेम्परेचर, देन आपका फूड अवेलेबिलिटी, फिर आपका आयोडीन कंसेंट्रेशन, थायराइड आयोडीन, वी नो दैट रिलेशन। ठीक है, फिर सैलिनिटी, these men believe that retardation of metamorphosis in axolotl is due to the saline nature of water as it impacts the genetic signaling required for the development of body। internal thing is very complicated, है ना, जैसे कि अच्छा वन मोर एग्जांपल, जैसे कि डायबिटीज इज टू टाइप्स। ठीक है, एक में क्या होता है द इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूसिंग दैट, द सेकंड टाइप ऑफ में क्या होता है इंसुलिन इज प्रोड्यूसिंग बट द इंसुलिन रिसीविंग सेल्स आर नॉट सिग्नलिंग। ठीक है, सपोज दैट आपके बॉडी में बहुत सारा हार्मोन है भी किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, बट हम लोग व्हेन वी कवर द हार्मोन, so hormone will cover the 3 types, the lipid one and that amino acid and the protein one, then we'll cover the signaling also, how the particular hormone start the introduction, start inducing the any type of particular process। ठीक है, so अगर ये problematic है तो भी problem होएगा, ये problematic है तो भी problem, diabetes everyone know I guess, right। उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर में थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, अदर में कैल्शियम एंड कंसंट्रेशन इज आल्सो इंपैक्टिंग। ठीक है, सेंसिटाइजेशन ऑफ टिश्यूज, वही वाला सिग्निफिकेंस क्या है आपका, यही सिग्निफिकेंस है। उसके बाद एक्सोलेटल लार्वा पे बिकॉज अलग से नोट आया है, देयर इज अ सेपरेट क्वेश्चन अबाउट द एक्सोलेटल लार्वा, so this is a basic, मतलब बेसिक तो हमें पता ही चल गया व्हाट इज एक्सोलेटल लार्वा, इट्स शोन आउट न्यूटनी और द पीडोमॉर्फोसिस, थोड़ा सा व्हील शो है। देखो ये इसका अडल्ट है और ये इसका लार्वल फॉर्म। ठीक है, लार्वल फॉर्म इज हैविंग दैट एक्सटर्नल, अगर सिनेरियो हुआ
तो इट विल कन्वर्ट, कंप्लीटली डिफरेंट है ये, राइट? दैट इज व्हाई आई हैव सेड दैट once upon a time axolotl larva was considered as a different species even. मे भी अगर environmental condition बहुत long time तक survive करते तो मे भी वो different species भी बन जाता. That is called the speciation. So when we cover that in the ecology, speciation. So there are multiple factors for the speciation. Basic example is your Darwin. Depending on the resources, the animal can vary. Can vary. Alpha, beta. एक पर्टिकुलर एरिया में सब लोग रह रहे हैं, ये एरिया पर्टिकुलर यहाँ से रिवर हो गई. अब जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ माउंटेन गोट्स टू द नॉर्मल गोट्स, है ना? क्या हुआ होगा? एक पर्टिकुलर ग्राउंड था, उसमें एंड दैट पर्टिकुलर ग्राउंड वेरियस टाइप्स ऑफ गोट्स वर लिविंग. सो बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ लैंड चेंजेस और द एंडोमॉर्फिक चेंजेस, यहाँ पे क्या हो गया? एक माउंटेन या प्लेटो लाइक स्ट्रक्चर हो गया. सो अब यहाँ पे जो गोट्स हैं, दे हैव ओनली टू ऑप्शन, ईदर दे नीड टू डाई और दे नीड टू सर्वाइव. सो हाउ दे डू दे सर्वाइव? दे कैन नॉट क्रॉस द and mountain and they can go other side. यहाँ पे resources are scarce, ठीक है? So some goat will shift somewhere else or some goat maybe remain over there. Some goat will start climbing on it, ठीक है? तो उनमें अभी क्या है, when we see that mountainous goat or the normal goat, we can clearly say that they are different species, ठीक है? When we talk about the species or the diversity, then we'll more elaborate. Genetic diversity अलग होती है, species diversity अलग होती है. जैसे Labrador और German Shepherd, दोनों क्या है आपके? Dogs. But they have the genetic diversity, not the species diversity. दोनों ही आपके डॉग की कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है? समझ आ गया? एम्फीबियंस में कोई डाउट एनीवन? अगर if the any doubt in the amphibians, है ना, then I'll explain it. Otherwise, I'll start writing about that reptiles. Online start करें reptiles. कोई क्वेश्चन है? रोहित, राजकुमार, मनीषा? यस, क्वेश्चन है कि नो? क्या कहना क्या चाह रहे हो? यस डाउट है और नो स्टार्ट करें, या यस मैम स्टार्ट करें, नो मैम नो डाउट. ओके, थैंक यू रोहित. ओके, आई गेट इट. आई मतलब यस आगे स्टार्ट कर. थैंक यू सो मच फॉर परमिशन. करें आगे स्टार्ट? अनुष्का एंड शो. आज मैं सोचती क्लास कैंसिल कर दूं बिकॉज आई नॉट फीलिंग इट, बट द क्लास वाज नॉट दैट मच बोरिंग, राइट? डिक्टेट करने का कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया. दैट्स व्हाई पीडियोमॉर्फोसिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इट नाइसली एंड मेक इट इन नोट्स, ठीक है? आज ही अपलोड कर दूंगी. बस वो लोगों का कुछ है, ये दोनों तो आज ही अपलोड कर दूंगी. वो वाला यार अभी कर नहीं पाई हूँ मैं, उसमें थोड़े से एक्चुअली दैट पीडीएफ इज कंप्लीटेड, बट मैं वो 3 पॉइंट जो है वो हाईलाइट करना चाहती हूँ सो दैट इट विल इजी टू अंडरस्टैंड. ये दोनों आज ही अपलोड करवा देती हूँ, ठीक है? ऑफलाइन चाहिए? ऑफलाइन में मिल जाएगी इफ यू वांट. इन व्हाट फॉर्मेट? शिवम तुम तो ऐसे बोलो, ऑफलाइन चाहिए ऑनलाइन? डू नॉट से एनी फॉर्म, ठीक है? हार्ड कॉपी मिल जाएगी, ठीक है? ऑनलाइन भी चल जाएगा. इनोसेंट गायब बच्चे हैं. आप थे ना उसमें शिवम? पुरानी क्लास आपने अटेंड करी है ना? कल सैटरडे है. मंडे विल बी ऑफ. या ऑफ कोर्स इफ दे गॉट द नोटिस. या मंडे विल बी ऑफ. ट्यूसडे को आप लोग आओगे भी नहीं मेरे ख्याल से. आओगे? जा रहे हो आप लोग? घर जा रहे हो? जा रहे हो शिवम? गुड. अच्छा, कॉलेज के? एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिक है. अनुष्का आप घर जा रहे हो? दिल्ली में है? कोई इशू नहीं. वैसे तो ट्यूसडे को क्लास होपफुली वो करेंगे, बट देखते हैं. अगर नहीं भी होगी तो आप लोग रिकॉर्डेड तो देख ही लो, है ना? वो वाली क्लास आई एम थिंकिंग कि वो तब ना शेड्यूल करें, वो डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल एलिमेंट्री कैनाल, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देखती हूँ. आई विल अरेंज इट अकॉर्डिंगली. चलो, मेक द हेडिंग रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया.
I know. The term reptilia, the term reptilia refers to refers to the word repair or reptum, repair or reptum, which means which means creeping or crawling, which means creeping or crawling. That is that is the mode of locomotion. Sorry, that is the mode of locomotion. First off, reptilia represent reptilia represent the first class of the vertebrate, first class of the vertebrate which are completely terrestrial. अच्छा, do not confuse into that crocodile. मैम crocodile भी तो है, crocodile है, but it's not like कि they cannot survive on the land. जैसे कि larva of that tadpole cannot survive, larva of the frog cannot survive. इनके साथ ऐसा नहीं है, right? They want that to do. मन है उनका, ठीक है? Which can fully क्या लिखा? Which are completely terrestrial and fully adapted for the life of dry places on land. Next point देखो. The characters of reptilia are the characters of reptilia are in fact the combination and evolution of fishes and amphibians on one hand, fishes and amphibians on one hand, fishes and amphibians on one hand, and birds, aves लिखो, aves and mammals on other hand, aves and mammals of other hand. So when we talk about the amphibia, reptiles, ठीक है, then aves and mammals so reptiles के बाद mammals, जैसे कि we know that Pisces के बाद आपके क्या है, amphibian के बाद क्या है, reptiles के बाद aves के बाद. So ये तो सीरीज सही है आपकी, Pisces to amphibians to reptiles, but this is not correct. Reptiles are actually diversified into aves and mammals simultaneously. ठीक है, इसीलिए जब भी आप पढ़ोगे so you will not read, you will not study कि ये aves का period है, ये mammals का period. Mammals, aves are a kind of, aves are kind of a very short period of evolution. What is the difference between the aves and the mammals? Basic. What is the difference? Only, right? Basically, they have the feather. Exactly. That means they have a specific kind of habitat. Otherwise, both are warm-blooded, right? Both have almost same type of vertebra also, है ना? मतलब because of course they just modified to survive into the they both are living in land completely, है ना? Both having the complete four chambered heart, both have the metanephric kidney, both have aminoteric uroteric, फिर again आपका वो modification हो जाता है because some are the modification for to survive in the air arboreal kind of lifestyle. ठीक है, क्यों हो रहा था ये? So यहाँ पे इसीलिए आप लोग जब हम लोग पढ़ते हैं एम्फीबियंस का पीरियड है, क्या कहते हैं आपका पाइसेस का पीरियड है, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, जुरासिक, बट एव्स का आपने कभी पीरियड नहीं सुना है, मैमल्स का पीरियड है, एव्स का पीरियड आपने नहीं सुना होगा. सो दे बोथ एव्स एंड मैमल्स आर सर्वाइविंग साइमल्टेनियसली. इसीलिए जब भी हम लोग मैमल्स का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं सच काइंड ऑफ, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया, mammals are further classified into that monotreme, eutreme, है ना? Prototheria मतलब those mammal who lay the eggs.
Generally, of course, generally not more, like 95% mammals do not lay and 98% mammals do not lay egg. ठीक है, दे आर द कंप्लीट विविपेरस. ठीक है मैम, आपके मोनोट्रीम जो होते हैं जैसे कि प्रोटोथीरिया, then metatheria, and eutheria. So metatheria and eutheria are majority of them. ठीक है, majority of mammals are, but although the eutheria, metatheria में आपके पता है कौन से आते हैं? Kangaroos. That means, but still they are not oviparous. They are viviparous. देखो यहाँ पे भी again parental care is a significance because they do not give the birth to the well-developed child. So they do have that pouch. Marsupials. They are also called as a marsupials. Parental care is that much important, right? Eutheria में आपके सारे mammals आते हैं. मतलब eutheria में आपके सारे वो आते हैं जैसे कि cow. ठीक है. Even the mammal world is actually originated from the word mammy. What is the significance of the mammy? Mammy is a simple milk gland. That means parental care का significance देख रहे हो? Parental care अगर होगी तो parental care का basic thing is your survival. If only the initial stages of any particular organism can be survived, only then adult stage can be reached. ठीक है? तो but हम लोग जब मेटाथीरिया की, प्रोटोथीरिया की बात करते हैं, प्रो मतलब अर्ली, किसी में प्रो लगा तो that means early. When we talk about the prototheria, so we say that these are your egg-laying mammals. Egg-laying mammals. But mammals में तो मैम मैमी पाया जा रहा है. अगर if the mammy is found, है ना, मैमी है मतलब मिल्क ग्लैंड है, मतलब नरिशमेंट और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर चीजें हैं, तो फिर क्या जरूरत है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ओविपेरस एंड विविपेरस? ओविपेरस में एग में सपोज दैट आप न्यूली एग देखो, इफ यू विल ब्रेक इट यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर देयर. एग इज काइंड ऑफ, एग में जो आपका योक होता है दैट प्रोवाइड अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन टू फॉर्म और टू डेवलप द ऑर्गेनिज्म, है ना. दैट मीन्स उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दैट यूथीरिया और द मेटाथीरिया, दे गिव the birth after the reproduction in itself is a complete process. ठीक है. So prototheria को when we try to connect it, like what is the characteristic? So we say that prototheria have the reptilians kind of characteristics. Not, we do not say that aves kind of characteristics. Because आपके reptiles भी कैसे होते हैं? Egg laying होते हैं, ओविपेरस होते हैं. इसमें आपके दो तीन एग्जांपल है प्रोटोथीरिया में, एकिडना है ना, एक platypus, yes, platypus. So they do have that beak also, a kind of, वो थोड़ा बहुत claws होते हैं उसमें, है ना. Such kind of modification we say. So यहाँ पे I'm just trying to connect कि reptiles के बाद aves नहीं और aves के बाद mammals नहीं है, reptiles के साथ aves and mammals. उस particular duration में evolution में कुछ तो ऐसा change हुआ था कि they needed to at that time to development of the like modification of the forelimb into the feathers. That's it. ठीक है, right on. Characteristics. Predominantly terrestrial. Comma, creeping or burrowing organism. Next point. Mostly carnivorous. Why? What is the significance of the carnivorous? इसको आंसर आता है, बता दिया करो. What is the significance of carnivorous, शिवम? More nutrition, है ना? One of that highest into the food chain. They can have that multiple kind of feeding habit, है ना? Most developed. Yes. Mostly carnivorous. Comma. Air breathing and tetrapodal vertebrates इसीलिए रेप्टिलियंस को एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक रखा गया है. जुरासिक इज वन ऑफ दैट पीरियड ऑफ रेप्टाइलियंस, हर्पेटोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट, बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल and can be divisible into four region, head, neck, trunk and tail.
head, neck, trunk, and tail. Next, they are covered with they are covered with dry and dry and cornified cornified skin skin having epidermal scale having epidermal scale. Just 1 minute. Sorry guys, they are not very well. That's why I need to take the class. Yes, what we have written? Called epidermal scales. Full stop. इसी में लिखो. As exoskeleton of horny epidermal scales. Horny epidermal scales. Shields. 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 Comma plates and scutes. Next, skin is dry. इसी में लिख लो चाहे. Therefore, sorry, skin is dry and devoid of glands. Next, mouth is terminal in position. Full stop. Continue. Jaws bears. Simple conical teeth.
स्टार बना के पॉइंट लिखो इसी में, इन टर्टल्स, इसी में इन टर्टल्स teeth are replaced by horny beaks. Teeth are replaced by horny beaks. Next. Bony endoskeleton. Bony endoskeleton. Full stop. Monocondylic skull. Monocondylic skull. अच्छा, skull of reptiles आपके सिलेबस में है, ठीक है? Skull of reptiles. Tomorrow we'll talk about it properly. जितना कॉम्प्लिकेटेड ये लगता है ना, ऐसे 5 अलग अलग, it is very easy, very easy to understand. Just once you need to understand. Tomorrow we're going to talk about this topic, ठीक है? Monocondylic skull with one occipital condyle, with one occipital condyle. सिर्फ स्टार बना के लिखो, स्टार बना के ऐड करो. A characteristic T-shaped interclavicle present. A characteristic T-shaped interclavicle present. Next. Alimentary canal. Alimentary canal terminates into cloacal aperture. Cloacal aperture. Next. Heart is usually 3-chambered. Heart is usually 3-chambered, comma, 4-chambered in crocodiles. 4-chambered in crocodiles. Next. Erythrocytes are oval and nucleated. Oval and nucleated. इसी पॉइंट में लिखना है. Oval and erythrocytes are oval and nucleated. They are cold-blooded animals. They are cold-blooded animals. Next. Respiration is by the lungs throughout the life. Respiration is by the lungs throughout the life as complete terrestrial habitat. As complete terrestrial habitat. Next. Kidneys are metanephric. Kidneys are some of that reptilians which actually entered into that stage when the evolution was changing and the temperature was so high. So because of the very high temperature, the water content reduced overall from the body and the land also, you know. So when the water content is used, so on the basis of your nitrogenous based product, which will be the nitrogenous excreted product? If the water content is very low, then in your ammonia, urea and uric acid, which will be the nitrogenous excretory product? Urea, uric acid, है ना? This is something I have already talked. Why? Yes, Manisha, absolutely correct. Why? Because when we talk about that birds maybe mainly we talked about that uric acid, but some of the reptiles also secrete the uric acid, and they have also the metanephric kidney, so they can absorb more water. So when we are talking about that formation of urea or formation of that, so वहां पे हम लोगों का ये वाला concept है. So this is your concept, that loop of Henle and then vasa recta and this like that. So यहाँ पे major function तो यही होता है, absorption of the water.
ठीक है, कि आपकी बॉडी में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बट विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ सो मच वाटर एंड अकॉर्डिंगली आपकी डाइट की, जैसे कि अगर आप बहुत ड्राई कंडीशन में हो तो आपकी जो वासा रेक्टा और ये सारे टाइप ऑफ नेफ्रॉन है वो क्या करेंगे, मोर वाटर अब्जॉर्ब करेंगे टू रिटेन द मोर वाटर इन योर बॉडी. बट इफ यू आर ड्रिंकिंग एनफ अमाउंट ऑफ वाटर, सो दे नो कि बॉडी में एनफ अमाउंट है, सो आई विल अलाउड टू सेक्रीट आउट थ्रू दैट यूरिन. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, वाटर इज वेरी लेस, है ना. लैंड पे भी मतलब एनवायरमेंट में भी बहुत पानी कम है और टेम्परेचर इज वेरी हाई. सो जब टेम्परेचर बिकम वेरी हाई वी डू द प्रेस्पायर, है ना, हमारा स्वेटिंग होती है. सो दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑब्वियसली. सोचो अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर में हो और आपकी बॉडी में वाटर भी नहीं है, बट शिवरिंग एंड प्रेस्पिरेशन, है ना, जैसे ठंड में हम लोग शिवर करते हैं, है ना, और समर्स में दिस इज बिकॉज ऑफ वी हैव दैट होमियोस्टेसिस प्रोसेस, है ना. दैट्स हाउ वी रेगुलेट अवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. जब बाहर का टेम्परेचर बहुत हो जाता है तो आवर स्किन स्टार्ट रिलीजिंग दैट स्वेटिंग, सो दैट आवर बॉडी रिटेन्स कोल्ड. जहां पे स्वेटिंग होती है वहां पे आप टच करो, वहां पे बॉडी आपकी थोड़ी सी कोल्ड रहती है ना. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द होमियोस्टेसिस. ठीक है, तो थिंक ऑफ अगर आपकी बॉडी में भी पानी नहीं हो और बाहर का टेम्परेचर भी इज वेरी हाई, सो देन it will impact overall the metabolic or the physiological activity. ठीक है, so now your body will start, अब excretory product है, urine है, kidney है, so they will perform their work, but they will concentrate, like they will do that more concentrated urine. जितना बॉडी में होगा वो और भी पानी में रिलीज, पानी वो भी और अब्सॉर्ब कर लेंगे. so in that condition some of the reptiles which lived in that scenario, so उनमें यूरिया की जगह भी क्या होने लगा, यूरिक एसिड फॉर्म. and we have already done that. uric acid is required very less amount of water to. ठीक है, बर्ड्स वाला अडेप्टेशन. ओके, रेनॉन किडनीज आर मेटानेफ्रिक. excretion is यूरिकोटेलिक. इसी में सामने के पॉइंट लिखो. urinary bladder is absent in snakes and crocodiles. urinary bladder is absent in snakes and crocodiles. Next, brains with the better development of cerebrum. Brains with the better development of cerebrum than in amphibia. Full stop. इसी में 12 pairs of cranial nerves. 12 pairs of cranial nerves. Next, write down. Reptilians are the first tetrapod. Reptilians are the first tetrapod who shows terrestrial adaptation in majority. Terrestrial adaptation in majority. Therefore, strong locomotory organs. Strong मत लिखो, ऐसे लिखो. Therefore, well developed locomotory organs as limbs in two pairs are present with pentadactyly and with pentadactyly digits and horny claws. क्योंकि पैर आपका जो है वो टच करेगा लैंड को एंड इट इज वेरी हॉट, तो वहां पे हॉर्नी क्लॉज डेवलपमेंट होगा. यहाँ पे द डेवलपमेंट ऑफ दैट हॉर्नी क्लॉज इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन इंटेग्यूमेंट. ठीक है, यहाँ पे इंटरनल क्वेश्चन, इट्स एपिडर्मल ओनली. ठीक है, नेक्स्ट, जैकॉब्स ऑर्गन. जैकॉब्स ऑर्गन, जैकॉब्स ऑर्गन ब्रैकेट में लिखो. वोमर नेजल ऑर्गन.
Present in the roots of buccal cavity. Present in the roots of buccal cavity. Concerned with smell. Concerned with smell. Which is well developed in lizards and snakes. Which is well developed in lizard and snakes. Next. Sexes are separate. Sexes are separate. Males usually have copulatory organ. Males usually have copulatory organs. Next. Internal fertilization. Internal fertilization. Full stop. Mostly oviparous. Mostly oviparous. फुल स्टॉप इसी में लार्ज योकी मीरोब्लास्टिक एग्स फुल स्टॉप कॉमा covered with leathery shells and always laid on land and always because that is why they do not require any kind of moisture or something क्योंकि इनके external egg की जो covering होती है that is very hard and always laid on land. No metamorphosis. No metamorphosis. As young resembles the adults. As young resembles the adult. Therefore, parental care usually absent. Therefore, parental care usually absent. Next, make the heading. Classification of reptilians. Classification of reptiles or reptilians. According to Bogart, more than 7,000 living and several more than 7,000 living and several distinct species of reptiles which are grouped into approximately 16 orders. क्लासिफिकेशन कल करेंगे, ठीक है, चलेगा? चलो, थैंक यू गाइस. We'll do the classification in tomorrow, ठीक है? We'll do the classification, then we'll talk about the reptilians. I hope reptilians is not enough, and we'll shift to the aves, ठीक है? Thank you. Apsara, diapsara, there's only 3 classifications. The class is ended, guys.